Good morning everybody and welcome. How are you? In my last class I have discussed and explained about addition, subtraction, multiplication, division of fraction. Okay, now I will start exercise 2b. Exercise 2b. Exercise 2b are the sums of addition, subtraction, multiplication, division and simplification. Okay, so exercise 2b, sum number 1. Simplify the following. 1 part 1 क्या है? 4 and 9 by 20, 7 by 12 minus 1 and 13 by 15. As usual, first you convert all the fractions, all the mixed fraction into improper fraction. 20 into 4, 80, 80 plus 9 equal to 89, 89 by 20, 7 by 12, 15 into 1, 15, 15 plus 13, 28, 28 by 15 again. Next step क्या था? Next step, take the LCM. LCM of denominators 20, 12 and 15. 20, 12 and 15 का LCM is 60. So 60 divided by denominator 20 equal to 3, 60 divided by denominator 12 equal to 5, 60 divided by 15 equal to 4. Now ये LCM, this LCM come to denominator. Okay, so 60 divided by 20 equal to 3, so 3 into 89, 89 into 3, 60 divided by 12 equal to 5, 7 into 5, 60 divided by 15 equal to 4, so 28 into 4. Now 89 into 3, 267, 7 into 5 equal to 35, 28 into 4 equal to 112. Now add and minus. 267 plus 35 equal to 302, 302 minus 112, 111 equal to 190, 190 by 60. इधर में कोई सिंप्लीफिकेशन होगा तो सिंप्लीफाइड वैल्यू पहले ही कर देना चाहिए. तो 190 divided by 60, there are 10 is the common factor, so divide 10. 190 divide 10 मतलब 19 and 60 divide 10 मतलब 6. 19 by 6 इसको, this is to be converted into mixed fraction. 3 and 1 by 6 is the answer. Next, 1 part 6. 2 and 2 by 3 plus 1 and 3 by 5 plus 6 and 7 by 10 minus 1 by 2. First convert all mixed fraction into improper fraction. Okay, 2 into 3, 6, 6 plus 2, 8 by 3. 5 into 1, 5, 5 plus 3, 8 by 5. 10 into 6, 60, 60 plus 7 equal to 67 by 10 and half. Now take the LCM. LCM of 3, 5, 7, 8, 10 and 2. 3, 5, 10 and 2 का LCM है क्या? 30. So 30. 30 divided by 3. 30 divided by 3 equal to 10. 10 into 8. 30 divided by 5 equal to 6. 6 into 8. 30 divided by 10 equal to 3. 63 into 67 into 3 and 30 divided by 2 equal to 15. 1 into 15. Now simplify that. 80, 48, 210 minus 15 equal to 329. 80 plus 48 plus 201 equal to 329 minus 15. But that means 314 by 30. Divide by common fraction 2. It is divisible. 314 divisible by 2, 30 is divisible by 2.
तो 30 को काटेंगे तो 50 आएगा, ये आएगा 157. 157 by 15 इक्वल टू 10 and 7 by 15. Next, find the following. Sum number 2, part 3. 3 by 4 of 2 and 3 by 7 into 1 and 15 by 34 within the bracket, first bracket. Okay, first convert all mixed fraction into improper fraction. 3 by 4 of 7 to the 14, 14 plus 3 equal to 17 by 7. Okay, into 34 into 1, 34 plus 15 equal to 49, 49 by 34. Now cut. 7 ones are 7, 7 sevens are 49, 17 ones are 7, 17 twos are 34. Okay, तो 3 by 4 of 7 into 1, 7 by 2. अभी ऑफ को क्रॉस करो, इंटू करो. 3 by 4 into 7 by 2 equal to, there are no common factors. Okay, so 3 into 7, 21, 2 into 4 equal to 8, 21 by 8, that means 2 and 5 by 8 answer. Next, एक ही sum number 2 part 6. 3 by 8 of 5 and 1 by 3 hours. इतने आवर का 3 by 8 निकलना है. ओके, 3 and 1 by 5 hours means 16 by 3 hours. तो 3 by 8 of 16 by 3 hours. That means 3 by 8 into 16 by 3 hours. 8 ones are 8, 8 twos are 16. काटो. 3 ones are 3, 3 ones are 3. So equal to 2 hours. Okay. Next में आते हैं 3. Sum number 3. Find the value of the following. Find the value of the following. 12 and half divided by 5 by 7 of 4 and 2 by 3. Listen carefully. First, converted mixed fraction into improper fraction. 12 into 2, 24 plus 1, 25 by 2 divided by 5 by 7 of 4 into 3, 12, 12 plus 2, 14 by 3. अभी क्या है? अभी है 25 by 2 divided by 5 by 7 of 14 by 3. रूल क्या है? रूल है ऑफ को क्रॉस में कन्वर्ट करो एंड मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये जो डिवीजन दिखा रहा है ना, ये जो डिवीजन 25 by 2 डिवाइडेड बाय दिस, ऑल दिस. अभी आप ऐसे करो कि इसको डिवीजन में लाओ, इसको नहीं लाओ तो गलत हो जाएगा. तो इसका ऑफ को क्रॉस में कन्वर्ट करो, पूरा मल्टीप्लाई करो, करके डिवीजन का काम करो. ओके, ध्यान में रखना चाहिए ऑफ का, डिवीजन का बाद ऑफ रहने से ऑफ का काम पहले करो. फर्स्ट डू द वर्क ऑफ ऑफ, नेक्स्ट गो डिवीजन. सो 5 by 7 into 14 by 3. 7 ones are 7, 7 twos are 14 equal to 5 into 2, 10, 10 by 3. अभी 15 by 2, 25 by 2 divided by 10 by 3. इसका रेसिप्रोकल ले लो, मतलब कि इसको पलटी कर दो. 3 ऊपर 10 नीचे, 25 by 2 into 3 by 10. काटो अभी. 5 5s are 25, 5 2s are 10. 5 into 3 15, 15 by 4, 15 by 4 मतलब 3 and 3 by 4. Now sum number 4. Simplify the following. 4 part 1. 3 and half, 5 and 1 by 7. It is complex fraction. Complex fraction are those fraction whose numerator is a fraction, denominator is a fraction. So इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे?
पहले उसको कन्वर्ट करो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 into 2 6, 6 plus 1 7/2, 7 into 5 35, 35 plus 1 36/7. Now 7/2 divided by 36/7. So 7/2 divided by 36/7. 7/2 अभी डिवाइड है तो इसको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा क्रॉस देके। 7/2 into 7/36 equal to, there is no common fraction, so common factors, so 49, 7 into 7 49, 2 into 36 72. It is the answer. Come here, it is also complex fraction. 2.5 divided by 7 and 1/8 upon 4 and 1/6 divided by 3 and 1/9. 2.5, that means 5/2 divided by 7 into 8 56 plus 1 57/8. नीचे में 4 into 6 24 plus 1 25/6, 3 into 9 27 plus 1 equal to 28/9. अभी क्या करो, अभी एज यूजुअल डिविजन करो। 5/2 इंटू इसका रेसिप्रोकल लो, मतलब 8/57। ओके, नीचे में 25/6 इंटू 9/28। अभी काटो, 2 1 2, 2 4 8, नीचे में 3 2 6, 3 3 9, मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 4 मतलब 20 बाई ऊपर में है 20/57 एंड नीचे 25 इंटू 3 75, 75 into 2 into 28 56. This is also complex fraction. So 20/7 divided by 75/56. 20/7 divided by 75/56. As per rule, अभी इसको रेसिप्रोकल ले लो। 20/57 into 56/75. 56/75 अभी काटो, 5 4 ज़ा 20, 5 15 ज़ा 75। 4 into 56 224, 70 57 into 15 88 855 855. It is the answer. Now sum number 4 part 6, fractional simplification. क्या है? 7 and 2/3 plus second bracket 2 and 1/5 minus first bracket 2/3 into 3/4 minus 1/5 first bracket close, second bracket close, and here is a line bar. फर्स्ट क्या करोगे? फर्स्ट करोगे लाइन बार का वर्क, ठीक है। एज यूजुअल कन्वर्ट ऑल improper fraction into all mixed fraction into improper fraction. 7 into 3 21 plus 2 23/3 plus 5 2 is 10 plus 1 11/5 minus 2/3 into, अभी इसका वर्क कर लेते हैं, लाइन बार है इसके ऊपर। तो 4 and 5 का एलसीएम है क्या? 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5 into 3 इक्वल टू 15। अगेन 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 4 into 1 इक्वल टू 4। ओके, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, इतना तक एक ही रहेगा। 15 minus 4 equal to 11/20. So 2/3 into 11/20 cut, 2 1s are 2, 2 10s are 20। नेक्स्ट लाइन में सब एक ही रहेगा। इधर 11/5 माइनस 11/30, 3 into 10 इक्वल टू 30, 1 into 11 इक्वल टू। ओके, नेक्स्ट सेकेंड ब्रैकेट का, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट ब्रैकेट कम हो गया, सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगी। 23/3 प्लस 5 and 30, एलसीएम ऑफ 5 and 30 इक्वल टू 30। 30 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 6 into 11 इक्वल टू 66 एंड
30 divided by 30 equal to 1, 1 into 11 equal to 11. Okay, 23 by 3 plus within second bracket 66 minus 11 by 30, 66 minus 11 मतलब 55, 55 by 30. So 23 by 3 plus 55 by 30. अभी इसको ऐड करना है. 3 and 30 का LCM है क्या? 30. 30 divided by 3 equal to 10. 23 into 10 plus 30 divided by 30 equal to 1. 55 into 1. ठीक है. 23 into 10 230. 55 into 1 55. 230 plus 55 equal to 285. 285 by 30. काटो इसको. पहले 5 से काटो. 5 6 ज़ा 30. 5 5 ज़ा 25. 5 7 ज़ा 35. फिर 3 से काटो. 6 3 2 ज़ा 6 2 3 19 into 3 equal to 57. तो 19 by 2. 19 by 2 equal to 9 and 1 by 2. 9 and 1 by 2 is the answer. Okay. नेक्स्ट में आ जाइए. 4 part 8 simplification also. It is also a simplification. 2 and 2 by 5. 2 and 2 by 5 मतलब 12 by 5 of 5 by 8 within third bracket plus within second bracket 7 on the 7 plus 1 11 by 7 divided by. ये डिवीजन का काम फर्स्ट ब्रैकेट का काम कर लो. इधर में फर्स्ट ब्रैकेट का काम पहले तो फर्स्ट ब्रैकेट में काम करना है. 5 and 7 का एलसीएम है 35. 35 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 7. 7 into 1 इक्वल टू 7. 35 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 5. 5 into 3 इक्वल टू 15. ओके. नेक्स्ट लाइन में आ जाइए. थर्ड लाइन में सब एक ही रहेगा. 7 प्लस 15. 7 प्लस 15 इक्वल टू 22. 7 plus 15 equal to 22. There is no common fraction. इसको नेक्स्ट लाइन में आ जाओ. नेक्स्ट लाइन में 11 by 7 into 35 रेसिप्रोकल ले लो इसका. 35 into by 22. अभी कट करो. 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22. ओके. नेक्स्ट लाइन में आ जाइए. सेकेंड ब्रैकेट का काम हो गया आपका. 5 by 8 प्लस 5 into 1 5, 1 into 2 2 into 3 by 8 3 by 8. अभी क्या करो. अभी पहले मल्टीप्लिकेशन का काम करना पड़ेगा, उसके बाद एडिशन का. ओके. 12 by 5 ऑफ 5 by 8. इसको मल्टीप्लिकेशन का काम जब करोगे इसमें कोई काटिंग नहीं होता बिकॉज देयर इज नो कॉमन फैक्टर. Okay, so 5 into 3 15, 2 into 8 16. फिर ऐड करो. 8 and 16 का LCM है 16. ठीक है. 16 डिवाइडेड बाई 8 मतलब 2. 2 into 5 इक्वल टू 10. 16 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 1. 1 into 15 इक्वल टू 15. So 12 by 5 of 25 by 16. 12 by 5 of 25 by 16 equal to 12 by 5 into 25 by 16. अभी कट करो. 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25. 4 से कट करो ये दोनों को. 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16. क्या आया? ऊपर में है 3 into 5 15, नीचे है 4. 4 into 1 4. 15 by 4 इक्वल टू 3 and 1 by 4. ठीक है. So exercise 2b is almost complete. Okay, I am giving the photocopy of these 2 pages. Rest of the sum you will do in your home and complete the exercise. Okay, very simple, very easy. follow करोगे, rule follow करोगे तो हो जाएगा. Okay, see you again. Goodbye.